Hello and welcome back to our channel Humanities Adda, and this is part 2 of the revision series that we started. And in this lecture I'll be discussing Al Biruni and इससे related जितने भी important board questions हैं जो अभी तक आ चुके हैं and the topics from where the question has been asked. So let us begin without wasting any time. Just a second. सो द क्वेश्चंस पहले हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो यहाँ से इस चैप्टर में से चैप्टर के स्पेसिफिक पोर्शन दैट इज अल-बिरूनी से पूछे गए. So first question here, state the inherent problems faced by Al-Biruni in the task of understanding Indian social and Brahmanical practices. So this question was asked for like 8 markers, 8 marks में पूछा गया है. Then examine the causes that made Al-Biruni visit India. Why is Al-Biruni's text Kitabul Hind considered as a voluminous text? Then you have described the experiences of Al-Biruni in the Indian subcontinent. Al-Biruni description of describe Al-Biruni description of caste system in India and elucidate any two features of Kitabul Hind. So these are like 6 questions और इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे बट वी विल दीज क्वेश्चंस आर नॉट इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर बट मैंने फिर इसको अरेंज किया है क्रोनोलॉजी में. जैसे ही अल बिरूनी का टॉपिक स्टार्ट होता है क्रोनोलॉजी वाइज आई हैव अरेंज्ड देम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट अल बिरूनी एंड देन वी विल टैकल द क्वेश्चंस. यहाँ पे हमें बर्थ देखनी है. अलबरूनी 973 एडी. कौन से ख्वारिज्म जो रीजन था प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान वाला जो रीजन है वहां पे इसका बर्थ हुआ था. अलबरूनी का बर्थ हुआ था स्पेसिफिकली एंड इन दिस रीजन वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग. अलबरूनी को उसके टाइम की उनके टाइम की बेस्ट एजुकेशन जो है वो रिसीव हुई थी. ही वॉज वेल वर्स्ड इन सेवरल लैंग्वेजेस सो यू हैव टू रिमेम्बर द लैंग्वेजेस when it comes to your MCQ perspective से देख लेना. Syriac है, Arabic, Persian, Hebrew and Sanskrit as well. Greek जो है Al-Biruni he did not know, but Greek वर्क के ट्रांसलेशन जो थे प्लेटो एंड अदर ग्रीक फिलोसफर्स जो थे उनके जो ट्रांसलेशंस थे अरबिक में अरबिक ट्रांसलेशन से ही वाज वेरी मच यू कैन से फेमिलियर. देन इन 1017 AD. This is the time period in the previous lecture जिसमें मैंने थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया था ऑल द ट्रैवलर्स का. उसमें मैंने 1070 AD अप्रोक्स बोला था बट दिस इज द एग्जैक्ट टाइम पीरियड. सो इट्स 1017 AD अप्रोक्सीमेटली बिगिनिंग ऑफ द 11th सेंचुरी जब देखते हैं कि सुल्तान महमूद जो है उसने यहाँ पे इस रीजन को इन्वेड किया और यहाँ से सेवरल स्कॉलर्स एंड पोएट्स को अपने कैपिटल ले जाता है गजनी गजनी में. एंड अल बिरूनी भी उसमें से एक था जिसको उठा के ले जाया गया था. एंड देन ही ही वाज टेकन एज अ हॉस्टेज बट वहां पे फिर ग्रेजुअली ही विल डेवलप अ लाइकिंग फॉर द प्लेस सिटी एंड अपने डेथ तक he will be staying there. So this is the region. The map is not clear, but you can just imagine this is India. This is the region of Iran. तो ये इधर उज्बेकिस्तान वाला जो region है ये वाला region था जहाँ पे अल-बिरूनी actually में he was originally he was uh, born and grew up. देन गजनी में जब ही वॉज ब्रॉट तब वहां पे अल बिरूनी ने एक तरीके का यू कैन से उसको इंटरेस्ट हुआ. ही डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन इंडिया बिकॉज उस टाइम पे हम देखते हैं कि जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है पंजाब वाला जो पार्ट है वो समहाउ वॉज ब्रॉट विद इन दी गजनी एम्पायर के फोल्ड में उसको लाया गया था. तो संस्कृत वर्क्स जो हैं एस्ट्रोनॉमी मैथमेटिक्स मेडिसिन वो ट्रांसलेट किए जा रहे थे इनफैक्ट अरबिक में 8th सेंचुरी ऑनवर्ड थी. एंड व्हेन पंजाब बिकेम अ पार्ट ऑफ द गजनविद एम्पायर तो कॉन्टैक्ट्स जो है बढ़ते हैं लोकल पॉपुलेशन के साथ. एंड देन यू विल सी एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है म्यूचुअल ट्रस्ट का अंडरस्टैंडिंग का. एंड देन अल बिरूनी बहुत सारा टाइम जो है अपना वो स्पेंड करेंगे in the company of Brahmana priests and scholars. He will be learning Sanskrit और रिलीजियस एंड फिलोसफिकल टेक्स्ट की स्टडी करेंगे. अब इनकी एग्जैक्ट हमें नहीं पता कि वेयर ही इज द इटनरी इज नॉट क्लियर कि कहाँ कहाँ पे इन्होंने ट्रैवल किया. बट वी नो दैट वाइडली जो पंजाब एंड नदर्न इंडिया के पास हैं वहां पे अल बिरूनी समहाउ ट्रैवल्ड. अब ट्रैवल लिटरेचर की अगर हम बात करें तो इस टाइम तक ट्रैवल लिटरेचर वाज
ऑलरेडी एन एक्सेप्टेड पार्ट ऑफ अरेबिक लिटरेचर। जब ये लिख रहे थे, जब अल किताबुल हिंद लिखी गई, तब उस टाइम पे ट्रैवल लिटरेचर वाज ऑलरेडी एक्सेप्टेड। अब दिस इज इट फॉर अबाउट अल बिरूनी। नाउ क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन बोर्ड का क्वेश्चन है कि एग्जामिन द कॉजेज दैट मेड अल बिरूनी विजिट इंडिया, 4 मार्क्स। 4 मार्क्स में ये आया हुआ है, तो यू नीड टू राइट एटलीस्ट 4 पॉइंट्स। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन यू कैन गिव। तो यहाँ पे 4 से 5 पॉइंट्स यहाँ पे है। मेन पॉइंट्स जो है कि जब सुल्तान महमूद ने, हमने डिस्कस किया कि ही हाउ ही इन्वेडेड द रीजन, ख्वारिज्म वाला जो रीजन है जब इन्वेड किया गया था, एंड अल बिरूनी को ले गए साथ में गजनी, तो वहां पे फिर एक इंडिया में जो है इंटरेस्ट डेवलप हुआ, एंड इसका अल बिरूनी का। एंड जब पंजाब पार्ट बनता है गजनविद एम्पायर का, कॉन्टैक्ट्स इंक्रीज होते हैं लोकल पॉपुलेशन के साथ, एंड देन एनवायरमेंट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग है, वो बनती है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो यू कैन जस्ट गिव अ you can just read these points, and you can then reframe these points in your own sentences. You can also write, uh, you can say a little bit about Al Biruni if you want to increase the length of your answer, but 4 points, 5 points is enough इस आंसर के लिए। अल्टीमेटली यू हैव टू स्टिक टू द एनसीईआरटी। तो कॉजेज यही है क्योंकि वो वहां से अपनी जगह से एक्चुअली में उनको हॉस्टेज बना के लाया गया था, एंड देन स्टेइंग इन गजनी, गजनी वाले रीजन में समहाउ जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होता है लेटर ऑन। सो यू कैन रीड दिस स्लाइड, पॉज एंड रीड। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है किताबुल हिंद। अब किताबुल हिंद के बारे में हम देखते हैं कि अरबिक में लिखी गई टेक्स्ट है, सिंपल है, ल्यूसिड है। इसको वॉल्यूमिनस टेक्स्ट कहा गया है बिकॉज इट इज divided into 80 chapters, and इसमें subjects हैं such as the topics religion, philosophy, festivals, astronomy, alchemy, manners and customs, social life, weights, measures, iconography, laws and metrology। तो ये सारी चीजें एक तरीके से हम देखेंगे, इन पे फोकस है, ये सारी चीजों के बारे में लिखा गया। बट ओवरऑल एनसीईआरटी में हम देखते हैं कि वी हैव टू स्टडी व्हाट अल बिरूनी हैज रिटन स्पेसिफिकली अबाउट द कास्ट सिस्टम, बट डू नॉट गेट कंफ्यूज कि इन चीजों के बारे में नहीं लिखा था। ये सारी चीजें भी हैं, एंड दैट इज व्हाई वी कंसिडर इट वेरी मच voluminous text. Generally, though not always, Al-Biruni, we will see that he adopted a distinctive structure in each chapter. तो हर चैप्टर में अल-बिरूनी का एक डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर रहता है। किताबुल हिंद में एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, then he has a kind of description to that question which is based on Sanskritic traditions, and then at the end a conclusion है। So you have a question, then you have a description, and then you have a conclusion with a comparison with other cultures। तो दूसरे कल्चर्स जिससे वो वेल अवेयर थे अपने रीजन के कल्चर से, वहां पे कंक्लूजन में ही यूज टू कंपेयर। Some present day scholars have argued that this almost geometric structure जो हमें chapters में देखने के लिए मिलता है, remarkable for its precision and predictability, because हर chapter में क्या होने वाला है, owed much to his mathematical orientation। because अल बिरूनी का अगर हम personal देखें तो mathematical orientation रहा है, तो that is reflected in his text किताबुल हिंद। Another thing we can see about किताबुल हिंद is that कि जो अल बिरूनी इन्होंने लिखा था अरबिक में, किसके लिए था? ऑडियंस, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द ऑडियंस, कि जो लोग थे लिविंग अलोंग द फ्रंटियर्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, उनके लिए ही वाज राइटिंग। ही वाज आल्सो फेमिलियर विद द ट्रांसलेशंस एंड अडेप्टेशंस ऑफ संस्कृत, पाली एंड प्राकृत टेक्स्ट इनटू अरबिक। तो इन टेक्स्ट के जो ट्रांसलेशंस थे अरबिक में, इनसे ही वाज फेमिलियर, and these ranged from fables to works on astronomy and medicine। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट हैं, इनके ट्रांसलेशंस देखने के लिए मिलेंगे। बट ऑन द अदर हैंड वी विल सी कि ही वाज आल्सो critical about the ways in which these texts were written and clearly wanted to improve on them। So he was kind of critical about the indigenous text, जो वो हमारे जिन जिन टेक्स्ट को, संस्कृत टेक्स्ट, पाली, प्राकृत टेक्स्ट के ट्रांसलेशंस को जो ट्रांसलेट किए गए थे अरबिक में, उन टेक्स्ट के बारे में, स्पेसिफिकली संस्कृत, पाली, प्राकृत टेक्स्ट के बारे में ही वाज सेइंग कि क्रिटिकल थे कि
किस तरीके से ये लिखा गया है, इसको और बेटर वे में लिख सकते थे। देन यहाँ पे एक सोर्स से सोर्स वन है, यहाँ से मैंने एक लाइन उठाई हुई है कि अपने वर्क को डिस्क्राइब करते हैं कि अ हेल्प टू दोज हु वांट टू डिस्कस रिलीजियस क्वेश्चंस with them here in bracket it means the Hindus, and as a repository of information to those who want to associate with them. So he is kind of saying that his work is a repository of information जो हिंदूज के साथ अपने आप को एसोसिएट करना चाहते हैं. So this is all about किताब और हिंद. So अब यहाँ क्वेश्चन जो आया हुआ है वो है why is Al-Biruni text considered as a voluminous text? This question is was asked in 2 marks sections, and then another question, elucidate two features of Kitab al-Hind. This question was also asked in 2 marks question. तो ये भी 2 marks वाले क्वेश्चन में आया हुआ है. तो यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी उसमें सेम चीज you can write and you can just have a look at this thing. Now next we have problems faced by Al-Biruni. Al-Biruni ने एक्चुअली क्या प्रॉब्लम्स फेस की व्हेन ही स्टार्टेड राइटिंग, ही स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द society, Indian society. So he has kind of Al-Biruni, he himself was aware of the problems inherent in the task he had set himself. He discussed several barriers that he felt obstructed his understanding. तो उसने डिस्कस किया है अपने टेक्स्ट में कि क्या बैरियर्स रहे हैं जिन बैरियर्स ने अल बिरूनी की अंडरस्टैंडिंग को एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट किया है. सो फर्स्ट वाज द लैंग्वेज. अकॉर्डिंग टू हिम संस्कृत बहुत ही डिफरेंट लैंग्वेज है फ्रॉम अरबिक एंड पर्शियन, एंड आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट्स इजीली ट्रांसलेट नहीं किए जा सकते वन लैंग्वेज फ्रॉम वन टू अनदर लैंग्वेज. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. सेकेंड बैरियर जो अल बिरूनी आइडेंटिफाई करते हैं वो था रिलीजियस बिलीफ्स का डिफरेंस और प्रैक्टिसेस का डिफरेंस. देन ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट third barrier, which is the self absorption and consequent insularity of the local population. Insularity means ignorance or or lack of interest in cultures, ideas or peoples outside one's own experience. So he is being like कि इंडियंस जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन अदर कल्चर्स, दे ओनली आर इंटरेस्टेड इन देयर ओन कल्चर्स, देयर ओन आइडियाज, और बाहर क्या चल रहा है उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है. तो दिस इज काइंड ऑफ द थर्ड बैरियर which he felt, which may or may not be true, we never know. So what is interesting is that even though he was aware of these problems, अल बिरूनी जो उसका सोर्स है किताबुल हिंद का, वो हम देखेंगे कि ही depended exclusively on the works of Brahmanas, often citing passages from the Vedas, Purans, Bhagavad Gita, the works of Patanjali, Manusmriti, etc., to provide an understanding of the Indian society. So this is it for the problems faced by Al-Biruni. क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है कि स्टेट द इनहेरेंट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय अल-बिरूनी इन द टास्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोशल एंड ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन. सेम जो हमने अभी डिस्कस किया, यू कैन सिंपली राइट द the same thing that we have already discussed. Now coming to the next topic and probably the last of Al-Biruni, that is caste system, which is important. So he tried to how he approached the Indian caste system and what he understood of the Indian caste system. He tried to explain the caste system by looking for parallels in other societies. He tried to compare other, what uh, was happening in other societies or what he knew about other societies. तो एंशंट पर्शिया के एग्जाम्पल लेता है, अल्बिरूनी एग्जाम्पल लेते हैं, एंड ही काइंड ऑफ he speaks of four social categories जो एंशंट पर्शिया में एग्जिस्ट करते थे. those of knights and princes, monks, fire priests, lawyers, physicians, astronomers and other scientists, and finally peasants and artisans. यहाँ पे हमें 4 कैटेगरीज देखने के लिए मिलते हैं. एंड इन अदर वर्ड्स व्हाट ही वांटेड टू कंक्लूड और सजेस्ट दैट सोशल डिविजन्स जो है वो सिर्फ इंडिया में एक तरीके से यूनिक नहीं थे, दे एग्जिस्टेड एल्सवेयर आल्सो. एट द सेम टाइम ही he pointed out कि इस्लाम में
all the men, they were considered equal and differing only in their observance of piety. That means, how holy you are or how much, religious you are. In spite of his acceptance of the Brahminical description of the caste system, so he kind of, we can say कि he accepted the caste system because he said कि एंशियंट पर्शिया में भी इस तरीके के जो डिफरेंसेस हैं, सोशल कैटेगरीज एग्जिस्ट करते थे, एंड देन ही सेज कि यूनिक सिस्टम नहीं था सिर्फ इंडिया का ये. ही एक्सेप्टेड द कास्ट सिस्टम बट ही disapproved the notion of pollution. So you should remember, this is an important point, कि जो pollution का notion है, शूद्रास और चंडालास के केस हम देखते हैं, उस notion of pollution को अल बिरूनी disapproved. He kind of disapproved this thing, and then he remarked that everything which falls into state of impurity strives and succeeds in regaining its original condition of purity. तो यहाँ पे लॉ ऑफ नेचर की बात करते हैं, एंड ही सेज कि जो भी इम्प्योर जो भी चीज है नेचर में, इफ इट गेट्स इनटू अ स्टेट ऑफ इम्प्योरिटी, वो वापस अपने ओरिजिनल कंडीशन ऑफ प्योरिटी में आने की कोशिश करती है. एंड ही गिव्स एग्जांपल ऑफ द सन क्लीनिंग द एयर, एंड देन salt in the sea preventing the water from becoming polluted. And then he says कि अगर ऐसा नहीं होता तो life on earth would have been impossible. So the conception of social pollution intrinsic to the caste system was, according to him, contrary to the laws of nature. So he says कि the notion of pollution है और social pollution का जो conception है, it is against the law of nature. I hope this is clear. Then criticism, sorry, this should be off, is writing on caste system. So if we have to criticize, 8 marks वाले क्वेश्चन में आता है, तो हमें कुछ काउंटर क्रिटिसिज्म अगर करना है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अल्बिरूनी, बिकॉज ही जस्ट रोट what he studied in the normative Sanskrit text, which specifically we see that कि उसमें रूल्स लिखे जाते थे गवर्निंग द सिस्टम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ब्राह्मण्स. तो यहाँ पे अल बिरूनी का जो डिस्क्रिप्शन है कास्ट सिस्टम, वो डायरेक्टली एक तरीके से इन्फ्लुएंस था. ही जस्ट स्टडीड द टेक्स्ट एंड प्रैक्टिकल चीजों को ही काइंड ऑफ इग्नोर्ड व्हाट वाज हैपनिंग इन एक्चुअल लाइफ, एक्चुअल सोसाइटी में क्या चल रहा था. सो इन रियल लाइफ जो है, हम देखेंगे कि कास्ट सिस्टम इतना रिजिड नहीं था. वी हैव ऑलरेडी सीन these kind of examples in, when we study ancient history. For instance, the categories defined as antyaja. Antyaja is a term which is important for your MCQ के perspective से, इसको ध्यान में रखना. The meaning is born outside the system, were often expected. So यहाँ पे एक example है which is contrary to the, the very strict caste system, कि अंत्यजा और ऐसे तो हम इसको बोलेंगे कि दे आर born outside the system, so they should be excluded completely outside the system. They should be completely outside the system, but they were often expected to provide inexpensive labor to both peasants and zamindars. So इसका एग्जाम्पल हमें चैप्टर 8 में और फर्दर देखने के लिए मिलता है. इन अदर वर्ड्स, while they were subjected to social oppression, they were included within economic networks. So socially they were oppressed, but they were a part of the economic network. Now describe Al-Biruni description of the caste system in India. 8 marks में ये question already it has been asked. So we have discussed the whole thing. You can write whatever we have already discussed. And then describe the experience of Al-Biruni in Indian subcontinent. The This is a question which has been asked in your 2019 boards, I suppose. So this is this question is demanding the whole experience of Al-Biruni in Indian subcontinent. So what all things you can mention is that the liking he developed for the Indian subcontinent, kind of how he was involved in translations and studying different texts. गजनी के टाइम से किस तरीके से he was associated, then what were the problems that he faced while studying the Indian society. Then you can also write about his opinion about Sanskrit language, that is given on page number 124 in the blue box.
And then overall opinion about the society, including the caste system, ये भी इसमें include कर सकते हैं. तो overall a general perspective you can give in this, because nothing specific has been asked in this question. So I hope, so this is the end of uh, this lecture. I hope this is helpful for you, and I'll be uploading uh, Ibn Battuta as well as Bernier soon. If you want to take screenshots, you can take screenshots, or I'll be adding the link of Humanities Adda Telegram channel. So you can join that channel where I'll be sharing the PDF also. So you can join that. So thank you for watching. Do like, share, and subscribe to our YouTube channel, and share it with your friends.